be fixed, or whatever, whichever council should be fixed. Okay? You can't do anything, right? But so why don't you say, even if it is interference, it is good interference? Now the only question, back to question of my lord, जो जज साहब ने पूछा था पहले ही दिन से पूछ रहे हैं, और वही मेरे ख्याल में असल सवाल है, कॉम्पिटेंसी की वाली बात रह जाती है. अदरवाइज व्हाई यू हेसिटेटिंग? से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कुछ होता. अब जब लेजिस्लेशन बन गया, हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है. हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाए हम फैसला करें, ना केस एक केस सुने दिन में 50 के सुने, हमारी मर्जी है. ठीक है? नहीं, सॉरी, इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं. हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे. तो पता नहीं, ये सीधी सीधी बात है. अब सीधी सादी बातें करें. केसेस में हमें उलझा करके घंटों चल रही है बहस. मतलब frankly, when I look at Section 2, I see no violation of the independence of the judiciary. Yes, if that principle that under no circumstances Parliament can ever say anything about constitution or benches, then of course, then Section 2 goes. But I don't think, if anyone can point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of the committee, and it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. He's one of the members. His role has not been eliminated. I move on to the second one, which is the most difficult one, which is, and Justice Shahid had asked a very important question about framing rules, framing rules. And I've dealt with that in my note. Your Lordship may have a look at that. But I'll move on to the second. But that's a very important question. There is no provision which says that rules should be framed. It says determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Thank you, sir. Sir, 3. Now, it's a very important, this is the only provision which I would ask your Lordships to read down. This is the only provision. Which is section? Section 3, sir. 3. What Section 3 does is that it says that there is this committee will at an initial stage look at whether these petitions are maintainable, whether the two conditions in Article 184(3) are present or not. Does it satisfy it or not? Now, this is clearly, as His Lordship Justice Mansoor has held, this is clearly a judicial adjudication. And this committee is really acting on the administrative side. It's obvious from the language of this provision. Now, there is nothing unusual, of course, about this initial, examination of these. The US Supreme Court does this. There is no hearing, there is no reasons at the leave granting stage. So the real problem is not that. The real problem is... There is a problem here. With all due respect, your analogy is wrong. And I'll tell you why your analogy is wrong. The Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. Yes. That out of the 9 judges, yes, at least 4 must agree to hear the case. That case goes to full hearing. But this scrutiny that you're talking about, that is not done by a committee of 3. That is why I was going to add. That is committee, because they all sit en banc. No, sir, that is what I was saying. What is not unusual is no reasons and hearing is given. No, that is not the problem with Section 3. Sir, मैं वही तो बता रहा हूँ. Your Lordship is saying that when those 4 judges sit, No, it's not the 4 judges. They have what are called conferences. I think every second Saturday they have a conference in which all 9 judges sit, and the cases are put up in conference. Any case that musters 4 votes yes, out of the total 9. Yes. It's not a committee of 4 that sits. All 9 sit. The full court sits. What we would call the full court. That sits, and if 4 out of those... and 5 when there is a grant of a stay order. Sorry? And 5 when there is a stay order. Yes. आप तो सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं ना? जी. तो अगर 4 जो हैं वो नहीं, 4 वोट उसको नहीं पढ़ते, what they call cert denied. ठीक है? So it's not that there's a separate committee. Whatever they do, because they have their own, because they always sit en banc.
यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि थ्री जो what my learned colleague Justice Mansoor Ali Shah has stated in a very clear statement of principle that the power of adjudication cannot be in the hands of any administrative committee. The context in which my learned colleague gave judgment was registrar, but as a matter of principle, with all due respect, it doesn't matter whether it's a committee, no matter how eminent or senior those judges are, the problem remains the same. So the US example, I'm sorry, is not... Sir, I was giving it for a different reason. If your lordship आप had ये भी allowed बता me- दीजिए कि अगर हम देखें एक मुल्क से दूसरे मुल्क के एग्जांपल्स हम देते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 120 केस से सालाना फैसला होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो फिर नंबर्स हमें दें। हमारा सिस्टम बिल्कुल फ़र्क है। हमारे सिस्टम में हर कोई सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं आता खुश नहीं होता है, या CPLA में आएगा या सिविल अपील में आएगा। वहाँ ये सिस्टम है ही नहीं, बहुत कम केसेस होते हैं। तो अगर आप हर केस पे बैठ करके फुल कोर्ट ये तयन कर सकता है कि वाले सुन लें ना सुन लें, तो आप ये सारी बातें फिर बताइए ना। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूसरी जगह से लगाना है तो फिर अंग्रेजी में कहते हैं कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड पेयर्स विद पेयर्स। ये तो नहीं हो सकता कि आप एग्जाम्पल ले लें और उधर तो जी 120 केसेस हैं। अच्छा, 120 केसेस में अगर पूरा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बैठ के तयन भी कर ले तो कितना वक्त लगेगा? आप बैठ करके 56,000 केसेस को तयन कर लें, वो बात ही नहीं होगी, वो अलग बात है। तो ज्यादा होते हैं जी। Let me clarify. आप बताइए। Cases run in several thousand. जी, several thousand. Out of those, only जी, 100 or हमें odd देखिए जो चीज हमारे pass पास the rule है of नहीं, law. मुझे नहीं पता। अगर आप कोई चीज फाइल करें हम पढ़ लेंगे Sir, उसको। the only reason I cited that, जी। I agree with you. US Supreme Court की Wikipedia पे page है. I agree. I actually agree with you. What I'm citing it, the problem with the provision is not that reasons are not given or there is no hearing. The problem is this maintainability adjudication cannot take place on the administrative side by even a committee. आप रिपीट कर रहे हैं बार जी। बार बार देखिए इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? रीड डाउन कर इसको रीड डाउन कर दें और रीड डाउन इस तरह करें कि the scrutiny may take place, but whatever the petitions are should be put up with the scrutiny report to a judicial bench. This is the way to say ये सिर्फ ये आपको करना है और not maintainable. वकील साहब, आपने सेक्शन 3 पढ़ा नहीं है जी। उसका आखिरी पार्ट पढ़ें। जी। आप जो रिपोर्ट की बात रीड डाउन करने की कर रहे हैं जी। इस सेक्शन का आखिरी पार्ट पढ़ें। Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 or Part 2 of the Constitution involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which shall also include the members of the committee for adjudication of the matter. आप जो बात कर रहे हैं ना, Which अगर may committee हो तो ये include- आखिरी words हैं, they would need to be eliminated. No, Obviously, no, committee, so the three member committee वो इसको scrutinize करे, yes, say not maintainable, puts it up before a Yes. 5-member judge, of which no, those why two- 5-member bench? 3-member bench? अभी सिर्फ ये वो और केसेस those पुट three अप members करेंगे से मेंटेनेबल फिर नहीं, यस, ये तो हर सर चेंबर में अपील जाती है, इनिशियली एक डिसाइड होता है मेंटेनेबिलिटी का इशू, दैट डजंट बार द कोर्ट फ्रॉम डिसाइडिंग द मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन इट इज पुट बिफोर अ जुडिशियल सवाल बेंच. जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि अगर फर्ज करें ये कह दें कि नॉट मेंटेनेबल, Yes. देन व्हाट वुड बी द रेमेडी अवेलेबल टू द No. एग्रीड पर्सन? अगर वो कह देते हैं नॉट मेंटेनेबल, आई वुड से दिस इज व्हाट योर लॉर्डशिप हैज, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो मेंटेनेबल होगा वो बेंच के पास नहीं जाएगा, नहीं, अगर फर्ज करें वो नेगेटिव में उसका वो आप कर जो दें, read तो down- फिर भी बेंच के ऊपर पास जाएगा सर. कोई judges नहीं जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है? सर यही तो रीड इन करना है, यही रीड इन करना बात है, सुने, उसमें ये भी लिखा यही हुआ है read in करना है. which That may is- which may include members of the committee. yes, So notionally, it can go before the same judge yes, again. yes. And this time you would expect them to hold that it is maintainable. सर फिर तो रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी खत्म कर देनी चाहिए. नहीं, मगर दूसरी बात है कि अगर ये So I think there's a कानून simple अगर solution to this. देखिए उसको सॉल्यूशंस ढूंढने से पहले जो मौजूदा निज़ाम है इस कानून को एक तरफ रख दीजिए,
तो इस मौजूदा निज़ाम में कैसे होता है? देखिए साहब, इधर भी थोड़ी सी सॉरी तवज्जो दे दें कभी कभी। नहीं नहीं सर, आप प्लीज शर्मिंदा पे शर्मिंदा नहीं तो आप देख कहीं और रहे हैं। तो जरा ये देख लीजिए, मौजूदा निज़ाम में अगर ये एक्ट तसव्वुर कर लें कि नहीं है बना, अब 184 की आई थिंग, अब तो वो ब्रांच में लिखेगा नॉट मेंटेनेबल, यही लिखेगा ना, या पुटअप कर देगा कोर्ट में या लिख देगा, फिर उसकी करेंगे चेंबर अपील, ठीक है, फिर जज कह जाएगा द ऑब्जेक्शंस आर सस्टेन्ड और ओवर रूल्ड। तो ये कहना कि ये जो निज़ाम आया है ये मौजूदा निज़ाम से खराब है तो एक अलग बात है। नहीं, ये मौजूदा निजाम से बहुत बड़ी अभी तो वो इख्तियार सारा उसके पास बैठा हुआ है, वो रजिस्ट्रार खुद भी नहीं कर रहा है, वो कोई सब डेलीगेटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा है, जो पता नहीं जो पिटीशन एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। और वो बहुत से लोग शायद अपील भी ना करें, वो भी चेंबर अपील है, वो अगेन वही जज अगर चेंबर अपील में उसने सपोज कह दिया, वो कल बेंच में बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक और चीज तरह की नजर से देख रहे हैं, अब बेंच में बैठ के दूसरी नजर से देख रहे हैं। All cases which go through scrutiny should be put up before a judicial bench. What is the issue? फैसल साहब ये बताइए, What is the issue? फैसल साहब ये बताइए, क्या जो इसकी डिफिकल्टीज यहाँ पे अभी हाईलाइट हो रही हैं, आर वी empowered under Article 191 to amend our rules accordingly and remove these difficulties? The power vests in us. बिल्कुल. So there, I don't see any I don't difficulty or don't problem see in this. how this provision is a threat to the independent. If all cases after scrutiny are put before a judicial bench. मिस्टर फैसल, यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए। 191 के तहत अगर फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल करनी है तो किसने कॉल करनी है? Where it is written? Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. It says the committee now. Where it is written? So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches with the committee now. Sir, वो full court meeting की बात कर रहे हैं, not the constitution of benches. तो इसका मतलब Sir, that is a practice, your lordship. नहीं तो If the practice chief तो यही justice है ना doesn't कि want to that amend is the to be rules, done by then the other Chief judges Justice. can call the meeting and amend the rules, Yes. and they do it. Sorry? If the chief justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. नहीं, उसमें नहीं है। Sir, these are very difficult questions which I need to really think आपके about. सामने एक सिचुएशन चीफ साहब ने रखी है जी, बिल्कुल. कि अगर मैं केस फिक्स नहीं करता तो क्या रेमेडी होगी आपके Sir, पास? मुझे इन सवालों Whether the other judges would be silent spectators? यही है ना। Can they call the convene the ये जो meeting and amend the conflicts rules? है within judges, इनके बारे में इसका जवाब इसी लेजिस्लेशन में दिया हुआ है, 2 सबसेक्शन 2 पढ़े। वो कमेटी की मीटिंग है। फिर वो कमेटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, इससे ऊपर जब शुरू करेंगे तो उसमें कौन सी चीज रह गई है? एवरी कॉज अपील मैटर वो बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं सर, ये जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है, उनका सवाल वो एक सवाल ये है कि इसमें कौन सी चीज है जो इसमें ओमिट की गई है। सर, आई वुडंट लाइक टू रीड मैटर एज इन्वॉल्विंग फुल कोर्ट मीटिंग्स। ना ये पहली दफा सिचुएशन अराइज हो रही है, जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो वी नीड योर असिस्टेंस। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? फुल कोर्ट कॉल करने का तो वैसे भी रूल्स में तो कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं। बिल्कुल नहीं। दिस इज प्रैक्टिस। देखिए साहब, जी, लाइटर नोट, इतने पैसे क्लाइंट ने नहीं दिए। अब मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। These are very difficult questions, my lord. I really have to think about that these conflict within judges, how are those to be resolved, whether writs are to be issued, what are the other mechanisms. These have no easy answers. मुझे इस केस के ऊपर सोचते हुए इतने हफ्ते लग गए. I think what your lordships are taking will take me 6 months to really think about. मिस्टर सिद्दीकी, हमने सुना है कि यू आर ए स्पोर्ट्समैन, कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान और वो जीती हो? And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. Sir, वैसे सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में होपफुली कप्तान नहीं होना चाहिए, सर लेट्स मूव ऑन. आई जस्ट रनिंग थ्रू. सिद्दीकी साहब, कैप्टन एक ही अच्छा लगता है। सर,
Section 4, sir. Section 4 says that whenever an interpretation of constitutional provision is involved, a bench less than, not be less than 5. I think, That is again a dictation. my lord, I mean, it is. Shall not be. My lord, it's. Why can't the committee say, well, this is an important matter? But how will that affect? If there is a substantial question of law, I don't have a question of Yeah. how will it affect. All along my question is, who is saying it? Who is constitutionally competent to lay down this principle? If This rule can be laid down by the court in its rules and If Parliament has in legislative- terms of its rule-making Sir, if- powers under 191. Sir, if Parliament has legislative power, then your lordship has to see whether this rule That's a big- violates the principle. That's a big if. Yes. If Parliament has no legislative power, then this law goes, this provision goes. Otherwise, one looks at according to this you, provision. Mr. Faisal, according to you, the Parliament has the Yes. legislative. And the only no, issue- move on. According to you, Yes, yes. Parliament has the power. Ji. We will decide whether Parliament has power or not. Not move on. ये clarity If- इसमें if- सिर्फ ये if the Parliament, if we come to the conclusion that yes, of course, Parliament has the power to make a law, then in law, the Parliament may use the word may or may use the word shall. But even Parliament cannot make a law which will destroy the power of the Supreme Court to make rules and violates the independence of the court. Okay, so tomorrow the Supreme Court, full court says, well, we think 5 judges are not enough, or 5 judges are too much, we want to make it 3. Can they do it? In terms They of this, cannot, according in to the you, they presence cannot. of this law, they cannot. Yes. Yes. So And that sir, means a power of this court has been trumped by a legislative instrument. sir, ये, चले आगे बढ़े ना ये आप the question should be what fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was that it's a bit badly drafted. The term is actually a substantial question of law involving interpretation. यही term use हुआ है Article 185(2)(f) में और यही term देखिए कोई नई बात करें तो जी, फिर दूसरों को सुन लेते हैं। जी एक सर, सेकंड, एक आपने कह दिया 3 को रीड डाउन कर दें, सिर्फ 3 को। ठीक है, 4 is badly drafted. अभी हम 4 पे आए हैं, अभी आगे 5 से Sir, you have an uphill task. no, but sir, the point is, has ever a law been struck down because of bad drafting? No. Or being No. impractical? A law can be struck down on various grounds. Yes. One of which is it is vague, it is unclear, it is Not on beyond, bad drafting. It is beyond legislative Yes, competence. but not on bad drafting. अब एक criminal lawyer ने ये law बनाया तो वो constitutional problems तो कुछ होंगी sir. Sir, section 5 sir. Is that a confession? You are saying it behind his back. Sir, मुझे तो यही समझ में आता है. नहीं ये ना अब करिए। now I come to the main question, which is this problem of a full court and there being no appeal. And the problem that if there are 8 or more, if there are 9 judges, there would be no appeal. नहीं मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है। देखिए ये ऐसे ना अप्रोच, नहीं, मैंने आप नहीं देखिए कहा। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर थी खराब थी, ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून मैं इसका जवाब दे रहा हूं। नहीं जवाब नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है, सवाल इसलिए नहीं उठेगा। सवाल तो valid है। जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए, आप जरा तवज्जो दीजिए। जी जी, मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को 1 मिनट एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, अब कौन सी अपील है ही नहीं ना। तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और प्रपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है। तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है। अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा, या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया है, 1% का रह गया। मैं यही बात कहूंगा कि the mere fact that there isn't an appeal
in certain category of cases would not make the law unconstitutional. And I'll tell you why. They may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again, the question will be, ये कैसे decide होगा? Again, we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So, on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that, because Parliament has said appeal होनी चाहिए, और appeal होनी चाहिए का मतलब है that every order of the Supreme Court under 185(3) has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबने केस सुन लिया. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेंगे वापस and कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए. So Faisal, if you look at the, I mean, to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's Yes. no intra-court appeal. Sir, so if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an inter-court appeal. अच्छा जी, इसमें एक और बात अगर आप मद्देनजर रखें, हम अगेन realm of conjecture, सिंगल बेंच इस वजह से जब डीबी सुनती है या 3 जज सुनते हैं तो इसलिए उसकी अपील नहीं जाती. लॉ रिफॉर्म itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. जी मैं एक मिनट आप सर जी देखिए, हम कंजेक्चर समाइज से भी बात कर सकते हैं. अब आप मुझे बताइए आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? I think 2015 सर. ये कितने साल गुजरे? जी 8 साल हो गए. तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? 2 बातें हो सकती है ना. एक तो पिछले के लिए हम फिक्रमंद हैं कि वो केस में वो जो 21वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट ऑफ अपील सलब हो गई और वो नहीं हो सकती है. ठीक है, ये एक मफरूजा हो सकता है. ठीक है. दूसरा है कि नहीं, हम पिछले के लिए फिक्रमंद हैं तो हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद. फ्यूचर की जब बात आएगी, जब एक्चुअल बात आएगी हमारे सामने, फिर हम अगर आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपस में कुछ समझ लेंगे इसको. हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा. हमारे सामने जो मसला आता है, और हमेशा ही कहा गया है, उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए. अब क्या मसला होगा आइंदा, हो सकता है कभी फुल कोर्ट होना, हो सकता हो जाए. तो जब वो मसला आएगा फिर आपको सुनेंगे कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए, 7 मेंबर बैठना चाहिए, 10 मेंबर बैठना चाहिए, वो सारी बातें इशू खड़े हो जाएंगे. अभी तो फुल कोर्ट एक ही बैठी थी, मुझे जहाँ तक याद है, आपकी बात सही है, 2015 में 21वीं अमेंडमेंट की बात. उसके बाद तो फुल कोर्ट नहीं बैठी, तो ये आई है दूसरी दफा फुल कोर्ट. My answer to the question. This is one way of legislation is framed. The legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Was there a thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind कि जी फुल अगर कोर्ट हियरिंग करेगा तो उसकी अपील नहीं होगी. And if it was thought about it, why was it not mentioned in the my response would be, so the obvious conclusion is that there is a flaw, and there is no flaw. is so apparent there is no that flaw. everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody is to the Supreme saying that there should be an There appeal. can never be an appeal to the Supreme You Court. have actually There can misunderstood. never. It's a No, Mr. Siddiqui, self-contradictory the question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench
because you have been stopped from doing so. Which means that when a full court, if the committee decides, or as in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne right of appeal. block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? कोई legislature दुनिया का appeal दे ही नहीं सकता. There is another aspect to it. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. No, there is an answer. We go around and put a full stop to it. कि जब full court में हम बैठ के, यानी कि हमने जब decide कर लिया full court, so then there's no right of appeal. You have deprived someone something that the lawmaker thought was essential. I think it's not a problem at all. It's not a problem at all. But मैं कहता हूँ, अच्छा ये 9 member की, ये देखिए, एक सेकंड, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 पढ़ लीजिए, ये जो पावर है राइट ऑफ अपील का, आपने तीन जजेस की कमेटी को दे दिया कि किसमें वो राइट ऑफ अपील देंगे और किसमें नहीं देंगे. सर मैं उसका जवाब दे दूं. मैं उसका जवाब दे देता हूँ. देखिए, full court I don't think even a right of appeal can be demanded. Now the issue is that in cases. So no, where does the law say that? Sir, it is an impossibility. You cannot provide 50 जज भी हो जाए किसी कोर्ट की, आप फुल कोर्ट की अपील किस तरह? लार्जर बेंच बन नहीं सकती ना. देखिए साहब Precisely the point that it has not even. देखिए साहब जरा देखिए इसमें It has not even been debated. अपील में ये बताया गया है कि the appeal should be heard by the larger bench. ठीक, लार्जर बेंच के नंबर्स नहीं बताए कि क्या एक जज मजीद बैठ के लार्जर बेंच होगा, 2 जज मजीद उसमें होंगे. लार्जर बेंच तो हो ही नहीं सकती ना. इसके अंदर जब फुल कोर्ट हो गया तो देयर इज नो लार्जर बेंच फॉर अपील. सर सुन ले, लार्जर बेंच की प्रोविजन भी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन आए. It's a matter of interpretation by the court and it's not. ये हम रूल्स में देख सकते हैं. इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है, whenever there is need, as per the constitution, a judge of any high court can be called for a particular case. तो लार्जर बेंच बनाने की, so इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं, ये इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं कि ऐसे करना ऐसे करना. तो आप 2 प्रोविजंस हो गए, रीड इन एक होगी, बैडली ड्राफ्टेड, ऐसे ही करते हैं. रूल्स में कर सकते हैं. Rules cannot read down something which the legislature could never do. मिस्टर सिद्दीकी, आप रिडंडेंसी तो इस अपील में रिडंडेंसी तो नहीं एट्रीब्यूट कर सकते ना. आपने अपील प्रोवाइड करनी है नहीं, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंसी. अच्छा नहीं करनी, बट लार्जर बेंच का मतलब ये फुल कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होगी. आगे बढ़े, आपका हमने मौके सुन लिया. होल्ड हो गया, लेट मी कंप्लीट. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट राइट, in order to preserve the right of appeal, in essence you can never constitute a full court. Sir, because full court पे अपील हो ही नहीं सकती, तो you can always constitute. आप उसको In that case there will be no appeal. flipping the argument. आगे बढ़े. आगे चलिए. Sir, आपका मौके सुन लिया, हमने कहा नहीं हो सकती. चलिए अगले बात पे. Section 2 retrospectivity का इशू था. ये अपील दे दी गई है retrospectively. Sir, there are two principles which will radically reduce the right which has been given. The first was pointed out by Justice Athar. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed after that under review jurisdiction, the appeal will not lie. These are not orders which. That's the first thing. एक सेकंड, does the law say this or this is your interpretation of the law? Sir, 184(3) के orders है ना. अगर आपने review file कर दिया, उस पे review का order आ गया. अगर किसी को अभी किसी का review pending है and he wants to really have the right of appeal, he has to withdraw his review. I mean, you see, there is no cut-off date of filing appeal. There is open-ended. There is a cut-off date for filing appeal. Mr. Siddiqui, जब वो सिचुएशन आएगा हम देख लेंगे ना. Sir, second principle मैं बता दूं. Second principle. अरे आप मफरूजों पे जा रहे हैं, वो what may or may not happen, but just tell us. देखिए, surely it boils down to one thing. Some of us think the law should be struck down because the right of appeal is not being extended to what will happen to the scenario when there's a full court. Okay, others think it doesn't matter. Fine. I'm just saying, can you strike down a law that it creates a right of appeal, but it is to be struck down only because in one given scenario there is no right of appeal? And sir, no law can be struck down on the argument of floodgates. No law can अब आगे बढ़े ना, आगे बढ़े. The second restriction is that
in every retrospective law, your lordships have said that this retrospectivity will never apply to closed and past transactions और वो vested rights have accrued. Sir, 184(3) के 1% से कम cases होते हैं. आप बात सुने. आपने रिव्यू निकाल दिया, आपने vested right निकाल दी, closed and past transactions कितने केस बच गए? कल ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि इसको आप रीड डाउन कर लें, and it actually means 30 days. Within 30 days of filing of the promulgation of this act, जो decisions आए हैं या before उसके आए हैं within 30 days, तब से वो limitation start होगी. लेकिन 1973 से या 1974 से नहीं होगी. ये भी argument आया और हमने note किया. Sir, I'm not arguing. There is nothing wrong with this provision if these two principles are. All right. I'll move on. Mr. Siddiqui, 184(3) is a constitutional provision जी, sir. and it is original jurisdiction. जी, sir. Appeal is continuation of the same. जी. How a law which is legislative incompetence because of not being a constitutional provision that can be provided by a simple lawmaking power of the legislator. I have extensively dealt. अगर आप मेरा note देख लीजिएगा उसमें. See your jerky motions I just that want to, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, अगर आप allow करें मैं जरा Simple बता दें आप. It's your jerky motions that distracts judges. They don't get to concentrate on your arguments. Sir, there is no bar under Article 184(3) that it bars that you can't create an inter-court appeal, and that has been done in other laws also. I mentioned two laws, the Law Reforms Ordinance, Constitutional Forum, appeal is provided. That is in entirely different premises. No, my lord, I think it is clearly, and that is what, when I had read the judgment. It has been explained by Mr. Ijazul Hassan, and very thoroughly that has been explained. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the appeal in the contempt of court, the most difficult part, and with the utmost respect. Which is incidentally for the said, I now come to the most difficult part. So section of this law is so convoluted and difficult that I have stated the reason why the law is so difficult. Every section is the most difficult part of your argument. That the most difficult part is that one never wants to say that, your lordship, there is a judgment which should be revisited. There are two judgments, and they have been rightly cited by the petitioner's counsel, my lord. One is the Bas Kakar case, where they have relied on certain principles of law and constitutional principles on the basis of which they seek the striking down of law. I will not go into the detail of this judgment, my lord. I'll just point out the pages. Page 1993 to 1995 deals with Section 8 of the Contempt of Court Act 2012. ये कौन सा पास मोहम्मद वाला है? जी, PLD 2012 Supreme Court 923. 923. Now, my lord, इसमें कौन बताइए? sir, 993 to 995. 993 to 995 इसमें क्या खराबी है? Sir, Section 8 in the ये कितने जजेस का? सर मेरे ख्याल में 5 दिखाओ बेटा, 5 मेंबर देने हैं, 1 2 3 4 5 थे सर. अच्छा, इसमें ये पेजेस गलत हैं, क्यों? नहीं, ये पेजेस गलत नहीं है, distinguishable है. The reason is that if your lordships looked at Section 8, which was struck down, of the Contempt of Court Act 2012, which I have attached in my notebook, वो ये करता था कि एक जज ने कॉग्निसेंस ले लिया है एक कंटेम्प्ट का, और वो ये कहता था कि ये ट्रांसफर कर दे. चीफ जस्टिस ने कॉग्निसेंस ले लिया और कहता था ट्रांसफर कर दे. So it was really interfering in judicial orders. Now, when it came to the appeal, what the Supreme Court has done is that it has said that Section 19 में जो appeal है वो ठीक है. Those are pages 1000. Those are pages. वो दिखाना मुझे, जजमेंट दिखाना.
It's para 82. पैरा 82 ठीक है, पैरा 82 ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट, पेज बता रहे हैं। पेज नाम 1004 ठीक है, पैरा 82 हो गया, हम ढूंढ लेंगे। para 82, and after striking down the 2012 Act, that law is revived. Now, the problem with the appellate appeals provision in the 2012 law was कि सर उसमें लिखा हुआ था एक अपील फाइल होगी, वो किसी शो कॉज के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ, और फिर फुल कोर्ट बैठे, सारे जजेस बैठेंगे। मतलब सारा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ले लिया गया था, और उसमें लिखा था फौरन सस्पेंड हो जाएगी। So that was such an interference that though whatever has been said, No, but can't you reconcile it by simply saying that in that case the parliament did something so extreme yes, to protect people of a particular who may have committed contempt, therefore the court found it necessary to intervene. Here maybe that they have not done something so yes, and extreme. the law was, I think, unconstitutional. So वो distinguishable है, provisions देख लीजिएगा. Now I come to the judgment which, with due respect, I think if the law is to be upheld, this law has to be revisited to a certain extent. If your lordship may kindly see, sir, this is called the Ghulam Mohyuddin case. Citation देते हैं. Sir, ये unreported है. It is 11th August 2023. 11th August, ये कितने member bench है? SMC के क्या नाम? Three member bench. नहीं, this is constitutional petition number 21, 22, 23 of 20. मैंने लगाया है सर अपनी पेपर बुक. ये कहीं रिव्यू वगैरह में तो नहीं पड़ा हुआ है? Sir, this is in review also. रिव्यू में फैसला हुआ है? नहीं. तो फिर इसको पता नहीं मुनासिब है या नहीं बात करना है इसके मुताबिक। Sir, there are passages in this तो judgment. अगर इसमें देखिए, अगर हम फिर उसको रिव्यू को फिर रिडंडेंट बना देंगे। Sir, वो बात, I think even if those passages are revisited, the judgment on its own would stand. नहीं देखिए, But there are passages. नहीं फैसल सिद्दीकी साहब, दो बातें हैं। पहली बुनियादी बात है, अगर एक वो रेगुलर उसमें आया है हमारे पास रिव्यू में, जो राइट एक्सरसाइज है, उसको हमें बात नहीं करना चाहिए। अब जहां तक असूल की बात है, अगर हमने इस केस में जिस तरीके से भी फैसला किया, असूली फैसला किया, अब उसका शायद असर उस पर पड़े या ना पड़े, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि लार्जर नहीं वो हम देखें, उधर जाने नहीं चाहते हैं, तो इस केस का जिक्र ही ना करें, बेहतर। My last point and then I will conclude, sir. Page 8. One thing I need to add. This law, which is under challenge now, was promulgated on the 21st of April 2023. Or review of judgments law immediately after that, which is 26th of May 2023. And if you go through, compare both laws, they are a repeat of each other almost, except that in review they said कि जी review में वही grounds होंगी जो appeal में होंगी. And it was pointed out to the. Sir, वो poem थी ना, try again वो. उसका क्या बना? Okay, you answered that. उसका केस You answered my question. Try again. There was so much desperation. नहीं, वो सेटिस्फाइड हो गया जी, उसमें भी रिव्यू है या नहीं है? नहीं, ये वाला रिव्यू वाला तो नहीं, ये जो दूसरा नहीं, ये उसी की बात कर रहे हैं। उसमें भी रिव्यू हुआ है या नहीं? जी, नहीं सर, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात की। अच्छा, इसी में? जी। अच्छा, ओके। इसमें जो एक और केस हुआ, ये subsequently आया। Sir, last point, which is page 8 of my note. Whether last point is difficult or easy? नहीं सर, ये सबसे आसान है. This might actually unite the court. Sir, if your lordship comes to the conclusion that any part of this law, let's say section 3, don't throw the baby out with the bath water. Sir, ये सारी जो provisions अगर आप देखेंगे तो independent है, सिर्फ 3 और 4 का ताल्लुक है 2 से, और किसी का ताल्लुक नहीं है. 3 or 4 refers to the committee in section 2. Even section 2, if it's upheld, and section 3 and 4 are not upheld, it will not make a matter. So if your lordship comes to the conclusion, I hope your lordships and ladyships don't, but then the doctrine of severability can be applied in this case. It couldn't have been applied in the 2012 case.
I'm very grateful to your lordship for a very patient hearing. To all your lordships and to your ladyship. Thank you. Thank you. We, at least speaking for myself, I compliment you for Thank you, sir. answering or trying to answer all the questions to the best of your ability. Thank you, You were sir. well prepared. Thank you, sir. Well, I'll Professor, add my voice to that. You must thank us also. We made you exercise, lose calories. Thank you, sir. Thank you. Very kind, sir. अब कितने लोग रह गए बता दें कौन कौन से हैं कोई जो मुख्तसर वाले हैं किसी ने आप कोई नई बात क्योंकि काफी तफसीली आपको फायदा मिल गया जाहिद इब्राहिम साहब और कौन थे फैसल सिद्दीकी साहब का इसमें सबमिशन यही थी कि हमने प्रेस रिलीजेस भी इशू किए थे रेजोल्यूशंस भी थी कि फुल कोर्ट की कंस्टिट्यूशन हो वो तो हो गया माय लॉर्ड बगैर आपकी प्रेस रिलीज पड़े हुए माय लॉर्ड अच्छा वो हमने सीएम लगाई हुई नहीं तो आपने जो बातें अगर लिख दी हैं तहरीरी तौर पे तो वो हम पढ़ लेंगे अगर आपको कुछ मजीद कोई खास पॉइंट रह गया है जो इनसे छूट गया है तो बता दीजिए नहीं तो काफी अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल में मेन आदमी शख्स होंगे इसमें सबमिशन यही है कि जो एक्ट पास नहीं आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्ट को मस्त अच्छा तो एक्ट पास हुआ है तो ये बताइए ये क्यों डिवीजन क्यों आया है वकीलों में पाकिस्तान बार काउंसिल एक मौक़िफ़ ले रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दूसरा मौक़िफ़ ले रहा है ये काफी एक कानूनी बहस है लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार ने जो रेजोल्यूशन और अपनी प्रेस रिलीजेस दी हुई हैं वो इसी पर्पस के लिए दी हुई हैं वो अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ लूँ माय लॉर्ड आपने फाइल की हुई है नहीं हम देख लेंगे अगर फाइल है तो ठीक है अब ये आपका सीएमए नंबर से बता दें इसका आसान जवाब ये है रीजनेबल माइंड्स कैन डिफर यस मनोज और इसमें सबमिशन यही है रीजनेबल माइंड्स वो आप अपना सीएमए तो बताइए नंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या फाइल किया माय लॉर्ड 4207 8087 एक सीएमए नंबर और 8087 सॉरी दोबारा आहिस्ता कहिए एक शख्स बोले जी मैम 4207 पहले है ये अलाउ हुई है और 8087 ये तो हो गई फुल कोर्ट हाँ अच्छा ओके 8087 दूसरी कौन सी है 8087 हम आपको कब खत्म नहीं करना चाहते मगर अगर वो बातें हो चुकी हैं वो दोहराने वाली बात नहीं है तो फिर रहने दें मतलब इसमें सबमिशन सिर्फ इतनी थी कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज किया गया है उसमें कर्टेल नहीं किया गया और उसमें अगर एक जज साहब के पास ये इख्तियार था तो वो अब 3 जजेस साहबान के पास इख्तियार आ गया है और अगर वो विद द कॉन्सेप्ट जिस तरह कुरान में भी है कि मशवरे के साथ अगर किया जाए इसलिए कि पहले मशवरे नहीं होते थे तो जिस वजह से हमने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमने सफ़र किया है और ऐसे ऐसे फैसले भी हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो केस है उसमें नसीम हसन शाह साहब ने खुद एडमिट किया था कि जो ऑर्डर हमने किया था वो हमारी गलती थी और कोई प्रेशर था तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि ऐसे ऑर्डर किए जाएं कि जिस तरह आर्मी चीफ को ये भी इख्तियार दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट भी बने और आर्मी चीफ भी रहे और 4 आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे इन यूनिफॉर्म और इस बात का तल्लुक कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि एक आर्मी चीफ होगा और वो सिटिंग होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने इसलिए ये हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसका कोई असर नहीं बल्कि मतलब डेफिनेटली इसलिए कि प्रीवियसली जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस व्यू नहीं दिया इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इख्तियार है ही नहीं है तो वो भी दिया गया और उन्होंने 11 आप क्या कह रहे हैं कि अपील का हक देकर के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बढ़ती है कम नहीं होती है ये बढ़ती है माय लॉर्ड अच्छा इसलिए कि अगर वो राइट दिया गया है अगर एक जज साहब के फैसले से कोई सफर करता है तो वो 3, 5 और 9 और इस तरह सुने आजाद अदलिया तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि जिस तरह प्रीवियसली हो गया है कि जफर अली शाह केस है उसमें फुल बेंच ने ये ऑर्डर फरमाया हुआ है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी हो गए आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो और आपने राइटली एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया तो इस तरह के अगर फैसले होंगे तो हम आगे फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे मेरी सबमिशन सिर्फ इतनी है कि फैसले ऐसे किए जाएं वो जो कौम को और दुनिया को नजर आए कि वो जुडिशरी ने फैसले तो आप समझते हैं कि इस तरह हो कि आज़ाद अदलियत हो लेकिन कानून और आइन के पाबंद ठीक है थैंक यू यही मेरी सबमिशन है ठीक शुक्रिया आपको कितने लोग रह गए Arguments हो तो ऐसी Is it short or is it long?
I'll try to be short. I've already had audience on the first hearing. I have filed written submissions and additional submissions, but I'll try to conclude my submissions in 1 hour, not more. Who would leave you to conclude your arguments in 1 hour? Not so. You will be bombarded with questions You now. can't get away that easy. No. I said 1 hour for me. कल आप हैं इधर? I am. कल कोई मेरा केस तो नहीं है कोई बड़े वाले कोई पंचेस एक रखा था ना बहुत बड़ा हाँ हाँ तो कल फिर ख्याल में आप भी जरा फ्रेश हो जाएं हम लोग भी जरा फ्रेश माइंड्स के साथ बैठेंगे अगर आपको अगर यू आर हियर यू नॉट I've noticed that in the first half an hour one can get away with questions and make substantial progress. You're going to regulate us. Today I noticed it. Are you going to regulate us? Are you going to tell us how we are going to conduct ourselves? I'm just hoping this is an expectation. It's a hope against hope. It's not going to happen. Regulating the Supreme Court appears to be the unthing these days. Not Flavor of the day.